भारद्वाज, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऑन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो इस लेक्चर में भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और न्यू प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सो लाइक ये जो हम लोग इतने प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक अच्छा फाउंडेशन बिल्डअप हो इस टॉपिक पे। So this question we have a differential equation of this form solution. तो हम लोग y को ऐसे लिखते हैं e to the power t a cos 2t plus e into sin of 2t. Single derivative is same for e to the power t into cos 2t plus b into sin of 2t प्लस e टू द पावर t। तो cos का क्या आता है माइनस 2a इंटू साइन 2t एंड प्लस 2b इंटू cos of 2t. So this we will write this in the simplified form. So e to the power t into 3 times a into cos of 2t minus it will be in the form not this e to the power t into a plus 2b into cos of 2t plus e to the power t into b minus 2a sin of 2t. So while double differentiating it, we get something like e to the power t will be common into a plus 2b into cos of 2t plus b minus 2a into sin of 2t. This plus e to the power t is a minus 2 into a plus 2b into sin of 2t plus 2 to b minus 2a. This term is cos of 2t. So this comes as e to the power t into a plus 2b. So minus 4a plus a comes out as minus 3a plus 4b into cos of 2t plus b minus 2a minus 2a minus 2b. So it is minus 4a and minus b times sin 2t. So this is the double derivative. We put this equation in the differential equation. So minus 3a plus 4b into cos 2t plus minus 4a minus b into sin of 2t minus 3 times minus 3 into a plus 2b into cos of 2t and minus, so it becomes plus into 6a minus 3b into sin of 2t minus 4a into cos 2t
माइनस 4b इंटू साइन ऑफ 2t। तो इतना बड़ा हमारे पास आ चुका है वो कॉफिशिएंट साइन 2t और कॉस 2t का। तो इसको हम लोग फाइनली एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -3a एंड -4a, सो -10a प्लस 4b -6b, दैट इज -2b। तो -10a और -2b is the final coefficient of cos of 2t। और सिमिलरली sin 2t का देखते हैं, देन -4a -b, तो -4a प्लस 2a, तो 2a -b -3b -4b -8b इंटू साइन ऑफ 2t। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉफिशिएंट्स आ रहा 2a -8b इंटू साइन ऑफ 2t प्लस -10a -2b इंटू कॉस 2t, -10a -2b इंटू कॉस ऑफ 2t। और ये इक्वल किसके है? -8 cos 2t। सो दिस इज इक्वल टू -8 cos ऑफ 2t। तो यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन रीच आउट दैट a इज इक्वल टू 4b, बिकॉज a इक्वल टू 0 होगा, साइन 2t का कोफिशिएंट 0 है। तो एंड आवर नेक्स्ट इक्वेशन इज, तो माइनस माइनस दोनों साइड प्लस हो जाएगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। So 5a plus b is equal to 4. We will put a is equal to 4b. So it comes out as 21, b is 4 and b is 4 by 21. Similarly, a comes out as 16 by 21. So our solution comes out to be, जो y of t है, that is e to the power t into 16 by 21 cos 2t plus 4 by 21 into sine of 2t. So this is the final solution of the question. And similarly, we can apply the same approach in this question as well. So we will put y is some k times e to the power -3 of x. So we will differentiate this 2 times. So we will get something in this form, minus and minus plus 9k into e to the power -3x and minus 15k e to the power -3x plus 6k e to the power -3x is equal to e to the power -3x. So this will cancel out everywhere. So 9 minus 15 plus 6. So this comes out as 0. So like it has no particular solution. So the solution only exists in the complementary function, like in the form of here -3 and -2. So c1 e to the power -3x plus c2 into e to the power -2x. This is y of x. This is the only possible solution. So हम लोगों ने इतना देख लिया इस लेक्चर तक। अब आगे कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे अगले लेक्चर में। So thank you.